अभी अभी एक अहम मीटिंग ली है जिसमें हमारे राज्यों के सारे हेल्थ मिनिस्टर जुड़े हुए थे और यूटीज भी जुड़ी हुई थी। और उसमें जो कोविड-19 की अभी की जो सिचुएशन है उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन हुई, सेक्रेटरी साहब की प्रेजेंटेशन हुई और उसकी समीक्षा हुई। उसमें हर पहलू पे बातें शेयर की गई। आज की सिचुएशन ये है कि देश में एज पर आवर रिकॉर्ड्स लगभग 2300 एक्टिव केसेस हैं। कल कोई 519 केस रिपोर्ट हुए हैं। इसके पहले 2 हफ्ते में 10 दिन में 110 इस तरह से केसेस आते हैं, लेकिन ट्यूसडे की रिपोर्टिंग वीकेंड की कई बार हाई होती है। ये वो भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि प्रभाव इस सिचुएशन में इस स्वरूप में कोविड-19 का बढ़ रहा है, ये हो सकता है। केरल में केसेस हैं, तमिलनाडु में हैं, कर्नाटक में हैं, खासकर गोवा में भी थोड़ा कंसर्न है। तो एक नए थोड़ी सी आउटब्रेक जरूर सामने आई है और ये भी देखने में आया है कि इस बारी जो आउटब्रेक है वो हो सकता है कि एक सब टाइप है जो BA 2.86 का वेरिएंट आगे जो स्वरूप लिया उसने, सब टाइप है JN.1, उसकी वजह से ये अपसर्ज हुई है। बाहर के देशों में भी ये वेरिएंट आना शुरू हुआ है, जैसे यूएस में 15 से 25% में कहा जा रहा है कि अब आ गया है। कोई घबराने वाली बात नहीं है पहले तो, क्योंकि इस वेरिएंट की जितनी भी अभी तक समझ है फैलने की क्षमता रख रहा है, लेकिन माइल्ड डिजीज करता है, खांसी जुकाम ही करता है। सीरियस डिजीज का इसका स्वरूप अभी तक जितना हम जानते हैं बिल्कुल नहीं है। हम अगर टोटल पिक्चर देखें तो सारे ही केसेस में से 91% मतलब 91-92% लोग घरों में ही हैं, अपनी नॉर्मल प्रक्रिया कर रहे हैं, खांसी जुकाम को वहन कर रहे हैं। और वजह से भी आता रहता है, सर्दियों का सीजन है। और जो भी डेथ्स हुई हैं पिछले 2 हफ्तों में, टोटल 16 डेथ हुई हैं टोटल। वो लगभग उन्हीं व्यक्तियों में हुई हैं एज पर आवर रिकॉर्ड्स एंड इंफॉर्मेशन जिनमें की सीरियस कोमॉर्बिडिटीज है, कोई हार्ट की डिजीज है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है। ऐसे ही लोगों में जैसे कि कोई भी इन्फेक्शन, फ्लू हो या कोविड हो, ज्यादा असर करता है, वैसा ही दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सब होते होते हमें याद रखना चाहिए कि कोविड-19 अभी गया नहीं है। ये वायरस घूम रहा है, अपना स्वरूप बदलता है और कुछ प्रदेशों में जैसे टेस्टिंग हुई है वहां पे, उस वजह से और वहां से शुरुआत हुई है कह लीजिए, तो देश को सजग रहना पड़ेगा। पहले भी उन्हीं राज्यों से होता है क्योंकि वहां आना जाना ज्यादा होता है और उनका टेस्टिंग के सिस्टम अच्छे हैं और फिर अगली जगह पे फैलता है। हो सकता है कि यही स्वरूप इसका रहेगा, माइल्ड, कोई लाइवलीहुड, हमारी नॉर्मल प्रक्रिया पे असर नहीं पड़ना चाहिए, यही उम्मीद है। लेकिन हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। अभी जो नया आउटसर्ज है कह लीजिए, बड़ा है, तो हमें हमारी जो तैयारी अभी तक चली हुई थी और हम उससे हटे नहीं थे, उसको भी अब और ताकत में लाना होगा। सरकार की तरफ से सर्वेलेंस को टाइट कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, सीक्वेंसिंग का काम और सजगता से सटीक तरीके से किया जा रहा है। हमारे लैब्स में वायरस को आइसोलेट करके और उसकी टेस्टिंग जो भी होनी चाहिए वो काम सरकार की तरफ से हो रहा है। माननीय मंत्री जी ने आज राज्यों के मंत्री समूह को रिक्वेस्ट करी है कि सबसे पहले नंबर 1 आप सतर्क रहिए और टेस्टिंग करिए, टेस्टिंग का डेटा प्रोवाइड करिए। जो सीरियस निमोनिया जैसी इलनेस होती है हमारी फैसिलिटीज में, जिले के अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजेस में, हमारे सर्वेलेंस का नॉर्मल हिस्सा है, उसको पूरी तरह से निभाइए। ये उनकी पहली रिक्वेस्ट है। दूसरी रिक्वेस्ट और एग्रीमेंट ये हुआ है कि हम अपनी जो हमारी जो तैयारी है, मॉक ड्रिल की बात है, PSA प्लांट्स की बात है, ICU सिस्टम की बात है, हमारे प्रोटोकॉल और जनरल अवेयरनेस और तैयारी सिस्टम में हो, वो को भी उसका संज्ञान लेने की उन्होंने रिक्वेस्ट करी है। क्लियरली कोई पैनिक की बिल्कुल वजह नहीं है।
कोई भयभीत होने की वजह नहीं है। हम सब में वैक्सीन लग चुका है, हम अंदर से सशक्त हैं और इस वेरिएंट के आने के ऊपर ऐसी कोई अनहोनी हो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते। इंग्लिश सर, इंग्लिश कोई पॉइंट रह गया क्या? नहीं, ऑल कवर। JN.1 वेरिएंट बाहर के देशों में ही शुरू हुआ। इसका सबसे पहला केस लक्समबर्ग में पाया गया और अगस्त से चला हुआ है और धीरे धीरे बढ़ा है। 36 से 40 देशों में इसकी रिपोर्टिंग हुई है। तो ऐसी ट्रैकिंग और बाहर क्या हो रहा है इसके ऊपर भी पूरी नजर है। कल WHO ने इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कह दिया, अलग तरीके से इसको स्पेसिफाई कर दिया कि ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है और उसका तात्पर्य यह है कि इसके ऊपर नजर रखी जाए और नजर रखने के लिए हम अपने देश में भी जो हमें काम करना है वो करेंगे। लेकिन जहां तक दिखाई दे रहा है कि वी आर वेल प्रोटेक्टेड ड्यू टू आवर वैक्सीनेशन प्रोग्राम एंड वी आर प्रोटेक्टेड फॉर काट देना इसको काट। ओके, हेलो 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 Sir, but all decisions have been taken in meeting. उसी पे चले जाए सीधा ही। और रिकॉर्ड करा के चलाइएगा, रिकॉर्ड करा के। और ये इंग्लिश हुई दीदी। हाँ Yes, sir. This morning, Honorable Union Minister of Health and Family Welfare, Dr. Mansukh Mandaviya ji, took a meeting with the state health ministers and representatives of all union territories to review the current situation with regard to COVID-19 upsurge in some of our states. As of now, there are, as per our reports, 2,300 roundabout active cases in the country. About 500 or so cases were reported yesterday. Sometimes the reports of the tests done on the weekend are also clustered around Tuesday, but this is the number that we have. Last week, typically about 100 odd cases were being reported from our country. So that is the situation. There seems to be an increase. Positivity rate also is high to the tune of about 20% in one or two states. What we are witnessing is therefore some upsurge in the COVID-19 situation, and it seems that a sub-variant of Omicron BA 2.86, which is being named as JN.1, may be playing a major role in this upsurge. This is a subvariant of previously dominating BA 2.86. What we know about this variant is that it causes a mild disease. It is not serious by itself. WHO has named it as a variant of interest. That means we watch it carefully. We keep on tracking this, keep on understanding its structure and so on. This variant has been present in 36 to 40 other countries, originally reported in Europe way back in August. So it's under watch, and we have to do our job in terms of tracking it and studying it much better. Important point again to repeat is that what we know as of now, that it causes mild cough and fever, upper respiratory infection. There have been 16 deaths over 2 weeks, last 2 weeks, 16, not yesterday, but over last 2 weeks. And all these deaths, to our information, were in those individuals who had very serious other disease conditions, comorbidities like cancer and hypertension, heart disease and so on, where flu and other illnesses do cause more stress. And we are also there, of course, in winter times when these infections become evident. So no increase in serious disease. 92%, 91% of the cases, as per our report today, are in home settings. They are doing their normal work and taking medicine. Admissions are very few. ICU admissions are negligible. So that's the overall scene. We are tracking the virus carefully. The JN.1 confirmed in Kerala in one case and 21 other cases in Goa are being tracked. So this virus
sub-variant is there in our country, and this is the same virus, as I said, which is driving upsurge in other countries. But we don't have to worry. As of now, we are protected because of our vaccination program. We should not have any unusual seriousness of the disease. However, we are dealing with the virus which has been changing its shape, behavior, and has been surprising the entire world. And therefore, the caution is the way forward without having to panic. No panic whatsoever. Please continue to do your normal work and live your normal life. The Honorable Minister has requested the states to take the following steps. Firstly, ensure that we communicate that we are ready, we are doing our surveillance. There is no need to panic, but we have to be vigilant and careful. That's the first message. Secondly, we must improve our surveillance. When we have a symptomatic individual, RT-PCR test should be done. Likewise, in facilities across the country, in district hospitals and medical colleges, we have an existing surveillance system which looks at flu-like illness to be tested and to be reported, and serious pneumonia investigations to be done. SARI and ILI, that should be strengthened. Sir, are you going to make masking mandatory? इसको छोड़ दो, मैं पूरा कर देता हूँ. Thirdly, the Honorable Minister has requested all the states to mount fullest preparation in terms of readiness for the hospitals, for transportation, for oxygen, for critical care, for medicines and drugs, and he's requested that mock drills should be conducted and overall preparation should be there. And lastly, he has requested that the people of every state should be reassured that without panic, continue to be vigilant, careful, and depend on the right authentic information, and there is no need and no reason why any misinformation should be given any importance. Thank you.